बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और आज सबसे पहले तो इस देश के लिए बहुत एक ऐतिहासिक घड़ी है और सबके लिए एक शुभ दिन है कि एक बहुत लंबे समय से 10 वर्ष से अधिक ये लंबित मामला कोर्ट में चल रहा था और किश्तों में कुछ कुछ न्याय प्रक्रिया मिल रही थी और आज इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया फैसला दिया है। तो मैं सर्वप्रथम तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी को, और इससे पूर्व में जो है जस्टिस कौल और जस्टिस MC गर्ग, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ ही बहुत सारे पुरुष अफसर जो लगातार हमारी मदद करते रहे और इस विषय में हमारे साथ न्याय प्रक्रिया में शामिल थे, उन सब का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। लेकिन आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है वो इसलिए बुलाई है कि कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी राजनीति करने का प्रयास किया। जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो SC/STs का मामला था, उस SC/STs के मामले में जो प्रमोशन को लेकर उत्तराखंड की सरकार का निर्णय था, जो सबके सामने आया कि वो निर्णय के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो कांग्रेस की सरकार, जिसने 2012 के अंदर एफिडेविट फाइल किया था, उन लोगों का था और वही लोग तमाशा कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। कुछ इसी प्रकार की हरकत आज देखने को मिली। आज जब राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया और मैं वो ट्वीट आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है महिला अफसरों को और कहा कि जो सरकार है वो डिसरिस्पेक्टफुल थी महिला ऑफिसर्स के प्रति और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो है कमांड को लेकर गलत जो है आर्ग्यूमेंट्स एक्सटेंड किए और परमानेंट कमीशन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। जबकि सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला हुआ तो ये सुप्रीम कोर्ट से पहले 2006 से ये केस जो है वो पहले दिल्ली हाई कोर्ट के आगे चला और 2010 में हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दिया तो 2010 में सरकार इस फैसले के खिलाफ 12 मार्च 2010 को ये फैसला आया और जुलाई 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सरकार ने चैलेंज किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2010 में केंद्र में किसकी सरकार थी जिसने इस फैसले को चैलेंज किया और 2011 फरवरी के अंदर हमने इसमें काउंटर एफिडेविट मैंने फाइल किया महिला अफसरों की तरफ से और अप्रैल 2011 के अंदर उस एफिडेविट के खिलाफ रिजॉइंडर जो है भारत सरकार की तरफ से जो है इनकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने फाइल किया कि वो परमानेंट कमीशन महिला अफसरों को नहीं देना चाहते। अप्रैल 2012 के अंदर जो एडिशनल एफिडेविट फाइल किया गया कि हमने हाई लेवल ट्राई सर्विसेज कमेटी बनाई है और उस कमेटी के गठन के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन नहीं देना चाहिए। तो 2012 में भी किसकी सरकार थी ये राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए। इसी प्रकार जुलाई 2012 के अंदर एडिशनल एफिडेविट जो है सरकार द्वारा पास किया डाला गया और उसमें भी अपोज किया गया कि परमानेंट कमीशन जो है महिलाओं को नहीं दिया जाएगा और इसके इनहेरेंट फैमिली रीजंस और तमाम तरीके की इन्होंने बातें की कि रैंक्स जो है वो रूरल एरिया से आते हैं, वो बात नहीं सुनेंगे, कॉम्बैट ये वो इस तरीके की बातें हुई। और आपको हैरानी होगी कि हम लगातार इसे विभिन्न स्तरों पर, मैं सरकार के साथ भी परसू कर रही थी और प्रधानमंत्री जी ने मई 2018 को 15 अगस्त 2018 को इस विषय को लेकर लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि वो परमानेंट कमीशन महिलाओं की आर्मी में होनी चाहिए, तमाम फोर्सेस में होनी चाहिए। इसका उन्होंने घोषणा जो है अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में प्राचीर से की और 15 अगस्त से पहले मई के अंदर ही एक एफिडेविट फिर फाइल करवाया गया सरकार के तौर पर कि वो परमानेंट कमीशन महिलाओं को देने के लिए राजी हैं और उसी के आधार पर 25 फरवरी 2019 यानी इसी साल के फरवरी के महीने में परमानेंट कमीशन को लेकर सरकार ने पॉलिसी बनाई। तो जो दो बड़े नियम जो रेगुलेट हुए जिसके आधार पर महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने की बात हुई वो हमारी सरकार के समय पर हुए और जो रही सही कसर थी जहां पे कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल आ रही थी कि जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनको नहीं दिया जा रहा था, तो उसके रहते हुए आज वो फैसला जो है
सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो मैं सब जजेस का जो इस फैसले से जुड़े रहे उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और जो लोग इस मामले को लेकर अपनी राजनीति चमकाने की घोषणा करना चाहते हैं उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी बुद्धि क्षमता का, आपके कर्तव्यों का, आपकी कर्तव्य निष्ठा का जो प्रतीक है वो सरकार ने जो 2014 से पहले कोर्ट में मामलों में किया वही आपकी अक्षमताओं को दर्शाता है। और 2018 से 19 के बीच में जिस प्रकार का रुख सरकार ने रखा वो हमारी क्षमताओं को दर्शाता है। आपकी अक्षमताओं के सामने हमारी क्षमताएं कहीं अधिक है, और सबसे अधिक तो वो जज्बा है देश की सेवा का जो कि आज महिला अफसरों ने करके दिखाया। और लगातार 20 साल से अधिक सरकारी नौकरी नहीं बल्कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आदि में ये महिला अफसर जो हैं काम कर रही हैं, और देश इनके जज्बे को सलाम करता है। और जय हिंद। Dear friends, I'm here to first congratulate the country because as a country we have created a history by granting permanent commission to lady officers. And when we as a society have changed our attitude towards women, and Army, Air Force, Navy are reflective of how attitudes of people have changed in this country. So I want to congratulate every Indian, every lady, every woman, every father, every brother who has supported us in their cause. First of all, my thanks goes to my Prime Minister, Mr. Narendra Modi, who in the year 2018, 15th of August, announced this policy from the ramparts of Red Fort that they are wanting and willing to give permanent commission to lady officers in the army. Then my thanks goes to the judges who wrote the judgment today, Justice Chandrachud and Justice Rastogi, who have created history by writing the judgment. And before this, the judgment which was written by Justice Kaul and Justice MC Garg in the Delhi High Court. My gratitude to all who supported our cause. My gratitude to all the male officers and men who have stood by us during our struggle. But I just came across a tweet by none other than Mr. Rahul Gandhi, who has used very derogatory language towards the government. Only if he was aware of the facts and tell Mr. Gandhi and tell him to press the refresh button that it was his Congress government which filed the affidavits before the court, argued vociferously against the permanent commission, which went in appeal against the order of the High Court, then only the benefit of Mr. Rahul Gandhi's wisdom will dawn upon the country as to what this gentleman is all about. I want to quote his tweet and I want to answer him in no uncertain terms as to what really transpired. So this case has been pending before the Supreme Court since 2010. Before this, the matter was before the High Court from the year 2006, and everybody knows whose government was in power at that time. And that very government on 12/3/2010, that means 12th of March 2010, High Court passed the order granting permanent commission to lady officers in all the forces, Army, Air Force and Navy. Against this order, in July 2010, the government of the day went in appeal. And that appeal was pending before the Supreme Court in the year 2010. We filed our affidavit in February 2011. So counter affidavit which was filed by us was also not accepted. They filed a rejoinder to the affidavit in April 2011. Post that, in 2012, because we pressurized the government, we brought in a contempt petition against them. They filed an additional affidavit informing the high-level Tri-Services Committee that they are going to constitute this committee and they will be considering the question of permanent commission and the report to oppose the permanent commission, basically. Then in July 2012, again an additional affidavit was filed by the then government stating that permanent commission to women officers in the Indian Army, citing various grounds and reasons, be declined and shall not be given. Everybody knows whose government was in power in the year 2012. And in May 2018, the present government filed an affidavit stating that they are willing to grant permanent commission to lady officers. And based on the Prime Minister's statement from the ramparts of Red Fort and this affidavit, a subsequent policy was made by the
Government of India in 2019, taking a policy decision about granting permanent commission. But there were certain gaps which have been filled by the court order. And thus, I want to tell Mr. Rahul Gandhi that he better be aware of what precisely has transpired, and his wisdom will definitely, had he been wise enough, would have helped the country, would have helped everyone. But unfortunately, he has not done so. And just to go on record, I just feel that a refresh button should be pressed by Mr. Rahul Gandhi. It was his Congress government that argued vociferously against the Permanent Commission of Women Officers in the Army way back from 2006 to 2010 to 2011 to 2012. And it was only the situation changed when PM made the statement from the Red Fort on 15th of August that government decided to change the policy of granting permanent commission to lady officers. And any guess which government challenged the Delhi High Court order, it was none other than his own government, which refused to recognize the lady officers. And that is my statement for the day, that we all as society welcome this judgment. We were hit by the legacy issue. This is the legacy of the previous government, and the legacy was fought very hard by each one in the court, and the court has taken a call and granted all of us, granted the lady officers permanent commission. Feel very happy and proud being part of this process and granting justice to those who deserve the justice. Thank you very much. Any question? Any question, I'll be happy to answer.